Hello everyone. So in the previous video we have seen how to make the fish flat. So in this video we are going to introduce a yellow ball so that if fish eats that ball the score will be incremented. तो basically हमको उसको एक फेवरेबल इवेंट देना है तो और उससे अगर वो इवेंट सक्सेसफुल होता है तो हम उसका स्कोर जो है मान लेते हैं 10 से बढ़ाते हैं और वो फेवरेबल इवेंट है येलो बॉल को खाना। सो उसके लिए कोड करते हैं। तो लेट्स गो टू द जावा क्लास। वी आर ऑलरेडी इन द जावा क्लास ओनली। सो यहाँ पे हम पहले तो वेरिएबल क्रिएट करेंगे। सो यू कैन जस्ट क्रिएट इट एनीवेयर ओवर हियर। सो इट्स प्राइवेट इंट येलो एक्स करके वेरिएबल ले लेते हैं, येलो वाई और येलो स्पीड। तो ये तीन ऐसे वेरिएबल्स ले लेते हैं, येलो एक्स, येलो वाई और येलो स्पीड। और येलो स्पीड को इनिशियलाइज कर देते हैं 16 पे। सो दैट्स इट फॉर येलो। और प्राइवेट पेंट येलो पेंट इज इक्वल टू न्यू पेंट, ऑब्वियसली इसे डिनोट करने के लिए। तो ये हो गया। ऐसे ही हमें बाद में ग्रीन बॉल भी बनाना है तो उसका इनिशियलाइजेशन करके रख लेते हैं फिलहाल। तो प्राइवेट इंट ग्रीन एक्स, ग्रीन वाई और ग्रीन स्पीड। और ग्रीन स्पीड को 20 ले लेते हैं लेट्स से। और सेम प्राइवेट पेंट ग्रीन पेंट is equal to new paint. So initialization part is very simple. Next is okay. So next we will be giving it a color and basic things. So color येलो दे देते हैं। अभी तक हमने सिर्फ वर्ड येलो लिखा है, उसे कलर दिया नहीं। सो कलर दे देते हैं। सो येलो पेंट जो है डॉट सेट कलर। सो कलर सेट कर देते हैं, कलर डॉट येलो। और ऑब्वियसली येलो पेंट डॉट एंटी अलायस सेट एंटी अलायस टू फॉल्स। ये दोनों करने के बाद तो हमने अभी तक उसे सिर्फ इनिशियलाइज किया है और उसे येलो कलर दिया है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे कैनवस डॉट ड्रॉ बिट मैप फिश जीरो के यहाँ पे अब उसे हम मोशन दे देते हैं। सो मोशन देने के लिए let us take yellow x is equal to yellow x minus yellow speed. So this is basically the x position of that particular object and obviously a condition. So if yellow x becomes less than 0, so then make yellow x is equal to canvas width plus 21. So ये फ्रेम में आ जाएगा बेसिकली। और येलो y is equal to int
अब मुझे रैंडम पोजीशन देना है उसे, ठीक है। एक्स का तो पोजीशन फिक्स है क्योंकि वो राइट साइड से आना चाहिए, अचानक से कहीं पे भी रैंडमली आ गया तो फिश उसे कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो वाई का पोजीशन जो है वो रैंडम रखते हैं हम लोग। तो इसे हम टाइप कास्टिंग कर देते हैं इंट मैथ डॉट फ्लोर, और इसके अंदर मैथ डॉट रैंडम। और इसके साथ ये कमांड लिख लेते हैं, दैट विल बी लाइक इनटू, we'll just rewrite this, so it would be like math dot floor, this will have math dot random into bracket max fish y minus min fish y plus min fish y. Again, to keep it in the picture, we need to add this. So I think yes, we are done over here by giving it the initial position. Now we'll just give it a shape as well. So canvas dot draw circle, and first parameter would be yellow x, second parameter would be yellow y, third is the radius, let us take it as 25, and the last is the object, so that is yellow paint. So this should be enough. Now we have to uh, increment the score when the fish reaches this particular ball. So for that, we'll create a function. So public boolean and let me name it as hit ball checker. तो आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। दो पैरामीटर्स ले लेते हैं, int x कॉमा int y। इसके अंदर फंक्शन के अंदर विल टेक अ if loop if fish x is less than x and fish and x is less than fish x plus fish 0 dot get width. So if x is less than fish x plus fish 0 dot get width, and fish y is less than y, and same over here for y, and y less than fish y plus fish 0 dot get height.